Hi everyone. This is the fifth lecture for your chapter Chemical Control and Coordination. In the last class, we discussed your adrenal glands. We saw two parts of the adrenal glands, adrenal cortex and adrenal medulla. Together, there were different hormones released from both of these parts, and their functions also we discussed at great length. Today, we will be talking about three glands in total, starting with thymus and pineal gland. Thymus secretes a hormone known as thymosin, and pineal gland secretes a hormone known as melatonin. Both of these are very small or minor glands. Okay, they are secreting only one hormone. Starting with thymus, if you remember, when we were discussing thyroid gland, I had shown you that where the thymus was present. Okay, thyroid gland is present near your neck, and thymus gland is present near your lungs and your heart. Okay, so this here is the thymus gland. It is endodermal in origin. It is bilobed. It also has two lobes and is located between the two lungs. Here are the two lungs behind the sternum. Sternum is your bone which connects all the ribs. Okay, where you wear your tie. Okay, have you ever seen? Right here, this here will be your sternum, and this is your rib cage. Okay, so these are the rib, and this bone here is your sternum. Okay, so behind the sternum, if you remove this bone, then you will find your thymus, which is present at the end of trachea, between the lungs and behind your sternum. It is large at the time of birth. So during the time of birth, you can see the size of this organ, the size of this gland is larger. But as you grow, okay, as you keep on growing, the size of this organ decreases, and it is reduced, or it is the smallest in size around puberty. Fine. So puberty is around, let us say, 12 to 14 years. So when a person reaches 12 to 14 years, the thymus has reached its lowest size. The cortex consists of densely packed lymphocytes, and this thymus gland also has a cortex, okay, and its cortex has densely packed lymphocytes. Lymphocytes are a type of your WBC, okay, white blood cells. These are the white blood cells which do not have any granules, and hence they are agranulocytes. Okay, lymphocytes, there can be of two types. You have either B lymphocytes or T lymphocytes, right? So T lymphocytes are mostly found in thymus. The medulla of thymus gland consists of reticular epithelial cell, a few lymphocytes. Okay, let me show you. This is the cross section. Fine. This is the outermost covering of your thymus gland. When you take a cross section, you will find these cells. Okay, these blue colored cells with large nuclei that you're seeing, these cells are all your thymocytes or T lymphocytes. Okay, T lymphocyte, the term T comes from thymus because they mature in thymus. And the second type of cells are called B cells or B lymphocytes. These B lymphocytes are formed and mature in your bone marrow, and hence their name is B lymphocyte. Right, so T lymphocyte, also known as thymocyte, can be seen here. These other cells that you see are called nurse cells. Okay, these nurse cells, they provide nutrition, they provide protection to your thymocytes when they are growing. Fine, so here you can see all of these are the nurse cells. When you go below, you can find all of these medullary epithelial cells which form the network. Okay, this looks like a network to you, right? Because of all of these arm like structures, it forms a network like structure. Clear? So it is known as reticular epithelial cell or just epithelial cell. This medulla, this portion is medulla. So it also has a few lymphocytes. As you can see, the number of lymphocytes is less in the medulla compared to the cortex. And it has corpuscles of Husserls. Here you can see this is the Husserls corpuscle, or which are also known as thymic corpuscle. So this is the basic structure of your thymus gland. It has thymocytes concentrated in the cortex,
And as you go towards medulla, you have a lot of epithelial cell, you have Hassel's corpuscles or thymic corpuscles, and you have blood vessels. Clear? T lymphocytes, they mature in thymus. Fine. So they are here again. People make mistake. It does not mean they are produced in thymus. Fine. They are synthesized. They are produced in bone marrow. Only your bone marrow can make all the blood cells. Okay, may it be RBCs or any type of WBCs or platelets. All of those cells can only be made in your bone marrow. Okay, so your bone marrow, it will synthesize what is known as naive T cells. Naive T cells are small baby T cells. Okay, these cells will then go to thymus. Now, after reaching thymus, they are trained. It is like a training camp. Okay, have you seen military camps? Same way. Here also, your thymus is military camp for thymocytes or T lymphocytes. So here the T lymphocytes, they are taught, they are matured, okay, and they grow inside the thymus. They mature in thymus and are released to reach other lymphatic organs like spleen, Peyer's patches, and lymph nodes. Now, in your immune system, you might have heard of these terms. Spleen, okay, is an organ where your dead, your RBCs, which are old, okay, they die there. Then spleen is also one of the lymph organs. Fine. So here, these T cells, they can go to the spleen. They can go to the Peyer's patches. Peyer's patches you may have read about in case of your intestine. Okay, in intestine you have Peyer's patches in your gastrointestinal tract. Okay, and you have different lymph nodes in your body. For example, the commonmost lymph node you may have heard of are your tonsils. Right, so tonsils are also lymph nodes. Then you have some lymph nodes in armpit. Then in different regions of your body you have such lymph nodes. So these are the places where your thymocytes or T cells can go and stay. Clear? So after maturing from thymus, they leave the thymus and they enter such lymphatic organs. Thymosin hormone, which is secreted by thymus gland, stimulates the maturation of lymphocytes. Okay, so this thymosin is the one which stimulates the growth and maturation of these T cells or thymocytes. And because of this maturation, they will be able to destroy bacteria or any pathogen. Pathogen is an organism which causes disease. Okay, thymus can provide cell mediated immunity. Now, there are two types of immunity. You have either cell mediated immunity, in which case your WBCs, okay, your white blood cells, they themselves go and kill the bacteria or pathogen. Fine. And second is humoral immunity. In case of humoral immunity, the cells like B cells, they produce antibodies. Antibodies are proteins. These antibodies go and attach to your bacteria or any pathogen, okay, virus, any pathogen, and that is known as humoral immunity. Okay, in older times, humor used to mean liquid, like if you remember, in case of eye also, when we were discussing eye, we have seen aqueous humor, right? So humor uh, here means your liquid portion. Okay, humoral immunity and cell mediated immunity. So thymus, it provides cell mediated immunity because of these thymocytes. And these T cells, when they are mature, when they are activated, they also activate the B cells. So as you can see here, the T cells, when they get active, okay, when they come in contact with any bacteria or any pathogen, they get activated. And when they get activated, they also ask the B cell to help. So the B cells start producing antibodies here, which is your humoral immunity. Thymus is also called throne of immunity or training school of T lymphocytes. Fine. And as I told you earlier also, that as the age, okay, increases, the size of this thymus gland decreases. So after let us say age of 18, your immune system is comparatively weak compared to a child's. Okay, a child is more immune because he or she has a larger thymus gland.
As this thymus gland decreases in size, the immunity or immune function decreases. Okay, it is almost absent in old aged people, and that is why they are prone to getting any of the infection. Second thing, in case of AIDS also, AIDS it affects your T helper cells, which are again a type of T cells only. So your T cells they die, and because your T cells are dead, your cell mediated immunity cannot work, and hence um, when a person has AIDS, okay, um, they can get other infections very easily because their immune system is not functioning. Yeah, chalo. That was all about the thymus gland. It is a very small gland, and it only has one hormone which is responsible for immune function, okay, for maturation of T cells. The second gland we will be talking about today is the pineal gland. If you remember, pineal gland we have discussed while discussing epithalamus. Okay, so when we were discussing diencephalon in your cerebrum, okay, sorry, in your forebrain, we discussed cerebrum, diencephalon, and your olfactory lobes. So here in this diencephalon, you have epithalamus, thalamus, and hypothalamus. So here, epithalamus on the dorsal side, which is at the back, it has this gland, which is known as pineal gland, which is shown here in purple color. Yeah. So it is situated on the dorsal side of diencephalon or epithalamus on anterior part of the brain. It is ectodermal in origin. Ectodermal in origin because it is part of your brain. And we have seen that your nervous system is ectodermal in origin. It is made up of pinealocytes, which are modified neurons. Okay, just like your adrenal medulla, which was also modified neurons, these are also these cells. Okay, pinealocytes. Now, pineal gland, so that pineal and cyte, CYTE means cells. The pinealocyte means the cells of the pineal gland, right? So these pinealocyte cells, or which are the modified neurons, and it is made up of those, and it has some supporting cells also, which we discussed. The supporting cells in your CNS and PNS are known as glial cells, okay, or neuroglial cells. So this pineal gland has neuroglial cells as well as pinealocytes. It secretes an amino acid derivative hormone known as melatonin. Okay, it secretes one amino acid derivative hormone which is known as melatonin. Melatonin is important in regulating diurnal or circadian rhythm. Diurnal cycle or circadian rhythm. I'll tell you what diurnal means. Di means two, okay? And during the day you have two phases. You have one night and one day, right? Together, I mean, one where the sun is up and one where the sun is not up, right? So day and night. So together that day and night, it forms a diurnal cycle, okay? Or circadian rhythm is the same as diurnal cycle. Example, your sleep-wake cycle. As soon as it is nightfall, your body knows that it is time to sleep. When it sees light, your body knows it is time to wake up, right? Then your body temperature and a lot of such things are regulated by your melatonin. As you can see here, melatonin as well as cortisol, both of these play a role in maintaining your circadian rhythm. Cortisol I did not discuss last time because I wanted to discuss it here. Okay, its function in circadian rhythm. So now what happens? As the night approaches, okay, after 6 p.m. or 7 p.m., the amount of melatonin secreted by your pineal gland increases. This melatonin is the one which tells your body that it is time to sleep. Okay, so it is highest around midnight, and then it again falls as soon as it comes around 6 a.m. in the morning. Clear? So melatonin, it gets the secretion starts increasing around 6 p.m., peaks around midnight, that is 12 a.m., and again comes back down during 6 a.m. Clear? So it is highest at night. This melatonin is responsible for your
sleep cycle. So when it is time to sleep, will be what you can say, stimulated by melatonin. Exactly opposite, the other hormone, which is shown here in the blue line, is your cortisol. Cortisol is the hormone which decides when you wake up. Okay, so when you wake up early in the morning, your cortisol level is high. Okay, if you remember what is the function of cortisol, cortisol increases gluconeogenesis. Okay, it is making glucose. Why? Because during the whole night, during 6 to 8 hours, you have not eaten anything, so you do not have any glucose left. Okay, all of your glycogen is also used up during the night when you are not eating, right? So as soon as you get up, your glucose levels, they shoot up. Okay, so that you feel more awake, you feel more energetic. So all of those are your functions of cortisol. Clear? So cortisol, it increases around 6 a.m. It starts increasing around 6 a.m., peaks around 9 a.m., and then during the day it falls a little. Okay, as soon as it starts falling, your melatonin starts increasing. So this is how together cortisol and melatonin, they maintain a diurnal or circadian rhythm. Here, apart from the sleep wake cycle and the body temperature and hunger, um, it also maintains a little bit of your menstrual cycle. Okay, so every 28 days, the menses should begin and ovulation should begin, and all of those will also be um, in a very elaborate pathway maintained by your melatonin. That is out of our syllabus, so I just mentioned it for your information. It is not related to your syllabus, so do not um, remember it or confuse it whenever a question is asked. Right? Now it is proved that the levels of melatonin rise during periods of darkness and fall during periods of light. It also influences metabolism, then pigmentation. Okay, pigmentation, if you remember, this is also affected by another hormone which sounds very much similar to melatonin. This hormone we studied in your anterior pituitary, and it was known as melanocyte stimulating hormone, MSH. So MSH also stimulates pigmentation. We shall see the difference in the next slide. Fine, but this basic metabolism, then menstrual cycle, immunity, all of this is influenced by your melatonin. Right. So in amphibians and reptiles, this hormone is related with metacrosis. If you remember this metacrosis, we have come across this term. In case of MSH also, I told you metacrosis means changing your skin color, okay, according to the environment. So here is the difference between the action of MSH and the action of melatonin, right? So it affects melanophores of skin. Melanophores, these are called melanocytes, okay? So they're cells which synthesize melanin. Melanin is a pigment. It is a brownish pigment which gives color to your skin. So it affects the melanophores of skin, acting opposite to MSH of pituitary. That is, it lightens complexion. So before looking at this video, let us just look at this diagram. In the first diagram, you can see the melanosomes or melanophores are these small granules which have melanin pigment, okay, and they are present on all sides. Because of this, the whole cell will look darker in color. Clear? It will give a darker complexion. When melatonin is secreted, this melatonin brings all of these melanosomes or melanophores towards the center. Excuse me, because all of these melanophores or melanosomes are concentrated towards the center, only the center will appear darker, otherwise the skin will become lighter. Okay, so the cell will appear lighter in case of in case of melatonin, and the skin will appear darker in case of MSH. Fine. So here it acts opposite to MSH of pituitary, it lightens the complexion. Now if you see here, this is the skin
At the bottom, this is the zoomed in version, and you can see the spots. They can grow in size, or they can reduce in size. So this growth or reduction in size, whether it wants to become more spotted or whether it wants to reduce the spotting, that will depend on melatonin. Okay, in case of animals, or metachrosis, that is changing their skin color. This hormone also controls the sexual behavior in mammals. Now, coming to the third gland for the day, which is your pancreas. Okay, pancreas you may have studied in your digestive system as well. Here, we will study pancreas, which secretes three different hormones. It secretes insulin, glucagon, and somatostatin. Pancreas is endodermal in origin. It is pink colored gland, and it is known as a mixed gland. Okay, in the starting only we had seen in the first class itself that there can be two types of gland. One type of gland is exclusively endocrine, like your thyroid gland. Okay, its only function is to control your endocrine system. Okay, and the second type of gland is called a mixed gland, in which it will have some exocrine function as well as endocrine function. So similarly here, pancreas is a mixed gland. It is located behind the stomach, so stomach will be present here. Okay, and it is a little behind the stomach. It is located in the curve of duodenum. This is the small intestine. The first part of the small intestine is known as duodenum. So this here, C-shaped, is the duodenum. So in this curve of duodenum, it is located. It is almost a leaf-like structure. When you look at it, it looks like a leaf. Fine. 99% of it is made up of pancreatic acini, which secrete digestive enzymes. So what you see here is a common bile duct, which will be coming from the liver and the gallbladder. This common bile duct, it merges with your pancreatic duct, okay, and it forms the hepatopancreatic duct, which opens in your small intestine. Fine. But if you look at this pancreas closely, if you take a cross section, okay, here, and if you look at it under the microscope, it looks something like this. Let me show you these rounded cells that you see. Okay, all of these are cells, and they are forming such kind of acini. Acini is just like a follicle, okay, except in the center it does not have any colloid. It directly secretes its juices in the center. Yeah, so these are known as acini. Remember, there can be acini in your liver as well. Okay, so you have to mention that these are pancreatic acini. So here you can see the pancreatic acini. In middle, the green colored portion that you see is known as pancreatic duct. Duct is a tube-like structure which will carry all the digestive enzymes and the digestive juices from the pancreatic acini. So these acinar cells, they secrete all the enzymes you can think of in from pancreas. Okay, if you have heard of then pancreatic lipase, pancreatic amylase, carboxypeptidase, aminopeptidase, trypsin, chymotrypsin, all of these enzymes are secreted by your pancreas, right? So in pancreas specifically, you have acinar cells, and these acinar cells secrete all of the digestive juices. Yeah, these digestive juices, this pancreatic duct, it will open into the duodenum, and it will help in digestion of the food. Fine. Now, apart from these 99% acinar cells, you also see some of these patches. Okay, some of these different looking cells. This group of cells is known as islets of Langerhans. Fine. So these are numerous small endocrine cells which are scattered between the acini. So these are all acini, and the islets of Langerhans are scattered between such acinar cells. Okay, they are 1 to 2 million cells which are present doing endocrine function. Okay, in your whole pancreas, there can be 1 to 2 million cells of endocrine origin. They form only 1% of the gland. The majority of the gland is secreting digestive juices,
Only some part is secreting your endocrine hormones. Okay. Now let us discuss these islets of Langerhans. Here you can see this one is islet. Okay, islet is somewhat similar to island. Have you ever heard of island? टापू, right? टापू जो है वो दरिया के बीच में एकदम आपको दिखेगा, right? So same way here. Just imagine that whole of your pancreas is made up of acini, and between this acini you have this pancreatic islet. Pancreatic islet has three types of cells. Actually, it has four, लेकिन हम तीन ही पढ़ेंगे, ठीक है? These are three are the important ones for you. So it has three types of cells. You have alpha cells, which are 25% of the total cells in islets. They are present towards the periphery. Okay, ये islet है तो उसकी periphery या boundary के पास आपको ज़्यादातर alpha cell दिखेंगे. As shown here, the light blue colored cells are your alpha cells. They are larger in size and they secrete hormone called glucagon. So near this SNR cell, near this islet also you have blood vessel. So directly the hormone they will enter your blood vessel, right? So here you can see that the alpha cells it secretes glucagon and glucagon is entering your blood vessel. Then the second type of cells you can see are beta cells. Beta cells are these dark blue colored cells and they form about 60 to 65% of total cells. Okay, they are highest in number. These are small cells in the central region and they secrete the hormone insulin. Insulin is shown in this triangle shape. Okay, and it can also directly enter your blood. The third type of cells are called delta cells. Delta cells, they secrete, they are about 10%, okay, in your whole islet, and they secrete a hormone known as somatostatin. This somatostatin is important for regulating the activities of alpha cell and beta cell. You have heard of this enzyme called somatostatin in case of hypothalamus. Okay, from hypothalamus when it is secreted, it is known as your growth hormone inhibitory hormone. Clear? GHIH is also known as somatostatin. So first thing it is secreted from your hypothalamus, and second place from where it is secreted is your pancreas. Okay, from your pancreas, delta cells they secrete somatostatin. This somatostatin it maintains the glucagon and insulin levels, okay, in the body. There is also a fourth type of cell. The fourth is type of cells which are shown here in pink color. Okay, you have these yellow colored ones which are the delta cells, and the pink colored ones are actually the fourth type of cells which secrete a peptide known as pancreatic peptide. Now this pancreatic peptide is a local hormone and it will be affecting your GIT. Okay, it will not circulate throughout your body, it will directly affect your gastrointestinal tract motility. Okay, but it is not a major hormone and hence I have not included it in today's discussion. If you ever come across such a question, then just remember, okay, pancreatic polypeptide or pancreatic peptide, it is also sometimes short form returned as PP. Okay, now before we go ahead and discuss all the hormones, I want you to remember some important terms. We have already come across some of these terms, but just as a revision, or if you want to note these down, very good. I will be very happy if you note these words down. Okay, these terms are important and they carry a lot of meaning. The first term is glycolysis or glycolysis. Fine. Glyco means glucose and lysis means breakdown. The definition of this word will be partial oxidation of glucose in absence of oxygen. Clear? Because that is what glycolysis is. We have already discussed this in respiration. So the first important term is the simplest one. It is glycolysis. Second term is glycogenesis. Okay. So here look at the underlined term. The underlined term is forming a word called glycogen. Clear? Glycogen is a polysaccharide made up of glucose,
and this glycogen is stored in your liver, right? So it is storage form of glucose, so glycogen. And now look at the second part of this word, which is genesis. I already told you genesis means synthesis, okay, to synthesize. So from the whole term together, glycogenesis means synthesis of glycogen from glucose. You take monomers, you take monosaccharides, and you make a polymer or polysaccharide of glycogen. So this process is known as glycogenesis. The third term is glycogen lysis. Okay, together it is called as glycogenolysis. Just understand glycogen and lysis. Lysis means breakdown. What is breaking down? Glycogen. So breakdown of glycogen to form glucose. Okay, exactly opposite of glycogenesis is glycogenolysis. The fourth term is gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis, I told you yesterday, it is synthesis of new glucose. Gluco is glucose, okay? Neo means new. Genesis means synthesis. So it is synthesis of glucose from non-sugar molecule. Okay, what can be such non-sugar molecules? They can be amino acids. They can be certain organic acids like oxaloacetate, malate. Okay, these can all be used to synthesize glucose from scratch. So this is known as gluconeogenesis. We had seen gluconeogenesis as an effect of cortisol, right? Cortisol or glucocorticoid increases the blood glucose level by performing gluconeogenesis. Adrenaline, we saw, it performs glycogenolysis, which is breakdown of this stored glycogen. Okay, adrenaline hormone will break down the glycogen and release glucose, and that is how it increases the blood glucose level. Clear? So important to remember the difference and the terms. The fifth term is lipogenesis. Lipo means lipids and genesis is synthesis. So synthesis of triacylglycerol or triglycerides or in general lipids is known as lipogenesis, and exactly opposite is lipolysis or lipolysis. Lipolysis means breakdown of the lipids to break the triacylglycerol and release the free fatty acids. These fatty acids then can be used for generating ATP. Clear? So these are the important terms which you should remember in case of endocrinology. Chalo. Coming back to the pancreas, the two hormones we will be studying are glucagon and insulin. Okay, we will study these two major hormones. Glucagon is a polypeptide. Okay, it is a peptide hormone having 29 amino acids. It is secreted when the blood sugar level is low. It is antagonistic to insulin. There are two words. Okay, first word is antagonist. Antagonist means having opposite action. So it is acting exactly opposite to that of insulin. So it is antagonistic to insulin. It stimulates gluconeogenesis and glycogenolysis in liver to increase the blood glucose level. Fine. So as you can see, what is the trigger? What is the stimulation? When will glucagon be secreted? कब secrete होगा glucagon? When the blood sugar level is low. जब आपका blood sugar level drop होगा, तब glucagon secrete होगा. Now, how I tell my students to remember this is glucagon. कैसे याद रखोगे? Glucose gone. Glucose कहाँ गया? चला गया. ठीक है? तो glucagon. Glucose is gone. तो जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है, मतलब नॉट कंप्लीटली खत्म ऑफ कोर्स, बट कम हो जाता है ना आपके ब्लड के अंदर, तो व्हेन द ग्लूकोज इज गॉन, एट दैट टाइम ग्लूकागॉन विल बी सिक्रीटेड. ठीक है, कभी सिक्रीट होता है ये भी आपको जानना जरूरी है. तो ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो. अगर ये ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ उसके बाद क्या, तो इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, तो इट स्टिम्युलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस. इसका मतलब हुआ नया ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन ग्लूकोज थिंग्स. ओके,
एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको तोड़ के ग्लूकोज रिलीज करो ब्लड के अंदर, ठीक है। बोथ ऑफ दीज टेक प्लेस इन लिवर। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों चीज लिवर के अंदर ही होती है, नॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ओके, ओनली इन लिवर you can have gluconeogenesis and glycogenolysis. थोड़ा बहुत ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में भी होता है, बट द मेजॉरिटी टेक्स प्लेस इन लिवर। अभी जब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तभी योर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेस और स्टिम्युलेट्स लाइपोलाइसिस, मतलब लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड को तोड़ेगा इसका मतलब फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगे, एंड दीज फैटी एसिड्स कैन बी यूज्ड बाय योर बॉडी टू जनरेट एटीपी, ठीक है। When the amount of sugar is increased in blood, then insulin will be secreted by beta cells. Okay? चलो एक बार ये डायग्राम पे आप फोकस कर लो। दिस इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? होम्योस्टैसिस इट शुड बी अराउंड 4 to 6 मिली मोलर, ठीक है। अगर मिली मोलर में पूछते हो तो 4 to 6 मिली मोलर होना चाहिए। एंड इफ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स, then it should be around 100 to 120 मिलीग्राम्स, ठीक है ना। 100 के आसपास 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इतना होना चाहिए आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल। अभी ड्यूरिंग द नाइट जब भी आप खाना नहीं खाते हो, है ना, लेट अस से आपने शाम को 8 बजे खाना खा लिया एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो रात को 12 घंटे तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो ये 12 घंटे आपके बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, राइट। सो ड्यूरिंग दीज नाइट टाइम, इसलिए देखो इधर रात दिखाई है आपको, है ना। रात के समय ज्यादातर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स लो, क्योंकि आप कुछ खाना वाना तो खाया नहीं है ना। तो ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, योर पैनक्रियास विल स्टार्ट सेक्रेटिंग ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जाके लिवर को बोलेगा कि चलो ग्लूकोज बनाओ, तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज रिलीज करेगा। एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा। When this both actions increase, your liver will start releasing a lot of glucose, and that is how your blood glucose level will come back to normal, है ना, वो normal level तक आ जाएगा। अभी let us say you have, अभी आप normal पे आ गए, पर फिर भी your liver is still doing glycogenolysis, gluconeogenesis, और यू हैव जस्ट हैड फूड। देख सकते हो आप इधर बर्गर फ्राइज ये वगैरह वगैरह दिखाया है। आपने सुबह उठ के 8 बजे लेट से ब्रेकफास्ट किया, है ना। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका डाइजेशन होगा फूड का, एंड विद इन 1 or 2 hours इफ यू चेक योर ब्लड ग्लूकोज, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आएगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज, व्हाई? बिकॉज all of that food has been digested. The glucose from the food is absorbed by your intestine. तो अभी इंटेस्टाइन से जैसे ही ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। So when you have higher blood glucose, it stimulates your pancreas to secrete insulin, ठीक है ना। वो इंसुलिन पैनक्रियास को बोलेगा कि चलो इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन का एक्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट हार्मोन, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंसुलिन। इतना समझ में आ गया, जब ब्लड ग्लूकोज कम है, व्हेन ग्लूकोज इज गॉन तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, एंड व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज इज हाई एट दैट टाइम इंसुलिन विल बी रिलीज्ड। इंसुलिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन जहां पे भी वर्ड आता है इट मींस काउ, ठीक है। काउ को बोवाइन ऐसे बोल सकते हो। तो बोवाइन इंसुलिन मतलब काउ का इंसुलिन आइसोलेट करके उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं, ऑल ऑफ दैट वाज डन बाय फ्रेडरिक सैंगर, एंड सैंगर आल्सो कॉइंड द टर्म इंसुलिन। तो नाम देने वाला कौन? ये इंसुलिन का नाम किसने दिया? सैंगर ने। और पूरी सीक्वेंस अमीनो एसिड की किसने फाइंड आउट की? सैंगर ने, ठीक है। तो फ्रेडरिक सैंगर या एफ सैंगर। इंसुलिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन लैब। ये पहला ऐसा हार्मोन है जिसको हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया लैब के अंदर।
और इस हार्मोन को हमने नाम दिया ह्यूम्यूलिन। ओके, ह्यूमन इंसुलिन को मिक्स करके वो वर्ड को बनाया आपने ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन जो है वी विल स्टडी इट इन बायोटेक्नोलॉजी एज वेल। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ह्यूम्यूलिन कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन इज मेड अप ऑफ टू चेन्स। दो पेप्टाइड से बना हुआ है, दो चेन से बना हुआ है एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का। टुगेदर दे फॉर्म 51 अमीनो एसिड। ठीक है, पूरा होके 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है। A chain is made up of 21 amino acid and B chain is made up of 30 amino acid. Together they are bound by disulfide bond. ये disulfide bond हमने पढ़ा था in case of your protein biochemistry। ठीक है ना। तो चलो now let us see। Normally जब इसका synthesis होता है then the whole insulin like this it is synthesized, है ना। ये पूरा आपका हो गया पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल। ऑन द एन टर्मिनल यू हैव द फर्स्ट अमीनो एसिड विथ अमीनो ग्रुप फ्री एंड ऑन द सी टर्मिनल यू हैव द लास्ट अमीनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिंथेसिस होता है। इन दिस पेप्टाइड ये पहला पार्ट जो है दैट विल फॉर्म द ए चेन, फिर बीच में एक आ जाता है सी चेन एंड फिर अगेन आता है बी चेन। ठीक है, तो अभी ये पूरा जो बन गया इट विल बी अरेंज्ड लाइक दिस। ठीक है, ये ए चेन जो है दैट इज प्रेजेंट हियर, द सी चेन इज हियर, वो कनेक्शन है ना, और बी चेन इज प्रेजेंट हियर। तो जब सिंथेसाइज होता है बनता है इंसुलिन देन इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस पूरा। लेकिन जब सिक्रेट होगा दैट इज अभी मैसेज आया कि चलो ग्लूकोज बढ़ गया है ब्लड के अंदर, तो व्हेन देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन शुड बी सिक्रीटेड। तो जब सिक्रीट होगा तभी ये सी पेप्टाइड जो है दैट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, ये पूरा सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा एंड ऑल यू विल बी लेफ्ट विथ इज दिस ए चेन एंड बी चेन। ए चेन जो है वो 21 अमीनो एसिड से बना हुआ है, बी चेन इज मेड बाय 30 अमीनो एसिड। दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इफ यू रिमेंबर आई हैड आल्सो शोन यू कि सिस्टीन जो है, ओके, दैट इज वन ऑफ योर अमीनो एसिड। सो सिस्टीन हैज एसएच ग्रुप, जिसको थायोल ग्रुप बोल सकते हो, सल्फाइड्रल ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस एसएच ग्रुप इज प्रेजेंट इन योर सिस्टीन। अभी थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि ये एक चेन जा रहा है और ये इधर से मुड़ गया, तो यू हैव वन मोर अमीनो एसिड ऑफ सिस्टीन। आपके पास दो एसएच हो गए। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन इज दीज हाइड्रोजन्स विल बी रिमूव्ड। ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे एंड यू विल गेट सल्फर सल्फर बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फाइन, दिस सल्फर सल्फर बॉन्ड आर नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड दो है, 1 and 2, and because of these disulfide bonds your A chain and B chain are joined together. ठीक है, so this is the structure of your insulin hormone. Now effects of insulin, कैसे काम करता है इंसुलिन। तो ये देख लो, आप पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आपसे ये जो स्टेटमेंट्स है दैट वी विल डिस्कस। थिंक ऑफ इंसुलिन लाइक अ की। ठीक है ना, आपके पास एक दरवाजा है, उसमें लॉक लगा हुआ है। अगर आपके पास की हुई चाबी है तो आप दरवाजा खोल सकते हो, ओनली देन यू कैन ओपन द डोर। ठीक है, तो इंसुलिन हियर इज लाइक अ की, ओनली इफ इट opens the door glucose can enter inside the cell। है ना, ये सेल अपने आप से ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ग्लूकोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर। उसको नहीं चाहिए ये ग्लूकोज, है ना। तो क्या होगा, यू रिक्वायर सम ट्रांसपोर्टर्स। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है जो ग्लूकोज को अंदर लेके आएगा, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है ग्लूट। याद आया, अभी आपने पढ़ा है ये इन बायो मॉलिक्यूल्स ओनली वी हैव स्टडीड GLUT, और उसमें स्पेसिफिक ग्लूट 4 भी मेंशन था, राइट। सो ग्लू जो है उसका मतलब होता है ग्लूकोज एंड T इज फॉर ट्रांसपोर्टर। तो साथ में मिलकर इसको बोलेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज होती है, बट जो नॉर्मली
we see are GLUT4 variety. ठीक है, चलो. Now coming back to this diagram, here you can see ये insulin receptor है ना, ये ताला है, उसके ऊपर इंसुलिन लगेगा जो चाबी है. जैसे ही इंसुलिन लगेगा देन योर ग्लूकोज चैनल्स या ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है इट विल ओपन. अभी ये क्लोज्ड है लेकिन जैसे ही चाबी लगी इट विल ओपन. जब वो ओपन होगा देन ओनली योर ग्लूकोज इट विल बी एबल टू एंटर योर सेल. इतना समझ में आया इंसुलिन की जरूरत क्यों है. इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज अंदर आएगा नहीं. ठीक है, राइट. कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, except neurons, RBC, retina, and genital epithelium, insulin stimulates uptake and consumption of glucose in all somatic cells. चलो सिर्फ इतना पहले पढ़ते हैं. इंसुलिन स्टिम्युलेट्स द अपटेक. ये अपटेक हो गया, ग्लूकोज अंदर एंटर कर लिया तो उसको अपटेक बोलेंगे. अपटेक एंड कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज, ये इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस का भी रेट बढ़ा देता है. ओके, तो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस विल बी इंक्रीज्ड इफ इंसुलिन इज प्रेजेंट. ठीक है, तो वो अपटेक तो बढ़ा रहा है, सेल ज्यादा ग्लूकोज अंदर ले रहा है लेकिन वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज भी कर रहा है. ठीक है, so insulin stimulates the uptake as well as consumption of glucose in all somatic cells. Somatic cells are the cells of your body, है ना, जो सिर्फ आपके गोनाड्स के अलावा जितने भी cells है you can call them somatic cells. Fine. Now let us come to this first statement. क्या बोल रहा है? Except neurons, RBC, retina and genital epithelium. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन में मतलब आपके ब्रेन में आरबीसीज को और रेटिना एज वेल एज जिनाइटल एपिथेलियम जो है इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है टू अपटेक ग्लूकोज. ठीक है, दीज पार्ट्स डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. आपके ब्रेन को परमिशन की जरूरत नहीं होती है कि अभी ग्लूकोज लो अभी ग्लूकोज मत लो, है ना. आपका ब्रेन, आपकी आरबीसी, रेटिना एंड जेनाइटल एपिथेलियम ये ग्लूकोज अपने आप से ही ले लेंगे. दे विल नॉट वेट फॉर इंसुलिन. वो जो दरवाजा है वो इंसुलिन से नहीं खुलता है ना, वो हमेशा खुला ही रहता है. सो न्यूरॉन्स, आरबीसी, रेटिना और जेनाइटल एपिथेलियम ये 4 जगह पे इंसुलिन की जरूरत नहीं होती. अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन एवरी अदर सेल ऑफ योर बॉडी रिक्वायर इंसुलिन. इंसुलिन होगा तो दरवाजा खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर आएगा. इंसुलिन नहीं है, दरवाजा नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा. Now let us see the actions on metabolism. इंसुलिन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं in your metabolism. First, let us talk about carbohydrate. Insulin inhibits gluconeogenesis and glycogenolysis. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नया ग्लूकोज बनाना. ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज फ्री करना. अभी when is insulin secreted? It is secreted when you have high blood glucose. इसका मतलब ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में हाई है, बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा है, आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्लाइकोजन तोड़ने की भी जरूरत नहीं है. राइट, सो इट विल इनहिबिट दिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये दोनों चीज को वो इनहिबिट करता है. सेकेंड थिंग, इट विल एक्चुअली प्रमोट एग्जैक्टली ऑपोजिट. वो क्या प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर एंड मसल. ग्लाइकोजेन जो है उसका सिंथेसिस लिवर में हो सकता है और ब्लड में मसल में हो सकता है. राइट, योर स्केलेटल मसल. तो ये दोनों जगह पे लिवर में और मसल में ग्लाइकोजेन सिंथेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा. ठीक है, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस. इट एनहांसेस यूटिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. मैंने जो आपको बताया था कि वो अपटेक तो करवाएगा लेकिन उसके साथ साथ उसका ग्लाइकोलिसिस भी इंक्रीज कर देगा. ठीक है, तो इट इज इंक्रीजिंग ग्लाइकोलिसिस ओके और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. और ये सब चीजों से क्या होगा? अभी आप ग्लूकोज ब्लड में से लेके सेल के अंदर डाल रहे हो, ग्लाइकोजन बना रहे हो, ग्लाइकोलिसिस कर रहे हो, तो द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल कम बैक टू नॉर्मल, है ना. ब्लड ग्लूकोज लेवल विल फॉल. सो दिस इज हाउ इंसुलिन इज एक्टिंग. What does it do to the fat? तो इंसुलिन प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस. अभी ये समझ लो कि अबंडेंस है, आपके पास फुल ग्लूकोज है,
आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, पैसा ही पैसा है, तो इन सारे सारे पैसों का आप क्या करोगे? लॉन्ग टर्म या फिक्स डिपॉजिट में डालोगे। सेम वे, आपके पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, व्हाट कैन यू डू ऑफ दिस ग्लूकोज? यू हैव ऑलरेडी stored some of this glucose in form of glycogen. Your body cannot store more than 100 grams of glycogen. वो 100 या 120 ग्राम ग्लाइकोजन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है उसके साथ वाटर भी इतना ही स्टोर होता है। सो योर बॉडी कैनॉट स्टोर अ लॉट ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या करेगा? अभी भी आपके पास पैसा ही पैसा है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तो दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज एक्चुअली यूज्ड टू synthesize lipids. तो लिपिड्स बनेंगे, एंड दिस लिपिड synthesis is known as lipogenesis. ठीक है, तो वो लिपिड्स बनाने का काम करेगा। इट इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस। अभी आपको लिपिड तोड़ने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन ऑल्सो इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। मैंने आपको बताया था जब एसिटाइल कोए, ओके, व्हेन दे आर हायर इन योर बॉडी, दीज एसिटाइल कोए फॉर्म्स कीटोन बॉडीज व्हिच आर एसिडिक इन नेचर। तो कीटोन बॉडीज जो है दे कैन बी यूज्ड बाय योर ब्रेन एंड हार्ट इन इमरजेंसी कंडीशन, इन स्टारवेशन कंडीशन। अगर आपने 10 दिनों से खाना वाना नहीं खाया है तो ग्लूकोज कैसे बनाएगा आपका बॉडी, है ना? स्टार्टिंग में वो आपके मसल तोड़ के ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन उसके बाद एक लिमिट से ज्यादा आप प्रोटीन को तोड़ नहीं सकते, मसल को तोड़ नहीं सकते। तो क्या होगा? फैट जो है, फैट को तोड़ के एसिटाइल कोए बनेगा, एंड दिस एसिटाइल कोए इज यूज्ड टू मेक कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज जो है दे कैन बी टेकन अप बाय ब्रेन एंड योर हार्ट टू कीप ऑन फंक्शनिंग। तो जब इंसुलिन है, इसका मतलब है यू हैव अबंडेंस, आपके पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो तभी कीटोन बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। सो इट विल डिक्रीज द कीटोन बॉडी सिंथेसिस। व्हाट इज इट डूइंग टू द प्रोटीन? इंसुलिन प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन सिंथेसिस प्रमोट करता है कि अभी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप सभी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ग्लूकोज जो है इट विल बी इन्वेस्टेड, ओके, इन बिल्डिंग योर मसल मास, और वो अमीनो एसिड का अपटेक भी ज्यादा कर देता है। तो आपने खाना वाना खाया, उसमें ग्लूकोज के अलावा अमीनो एसिड भी रहेंगे। तो दीज अमीनो एसिड आर टेकन अप बाय योर मसल्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन, और फिर ये अमीनो एसिड से प्रोटीन वोटीन बनेगा और आपके मसल्स जो है दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो इट प्रमोट्स अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय लिवर एंड मसल। न्यूक्लिक एसिड पे क्या करेगा? तो न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज डीएनए एंड आरएनए, उसका सिंथेसिस प्रमोट करेगा। ठीक है, इट अफेक्ट्स द बीएमआर ऑफ द सेल्स। जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो ग्लाइकोलिसिस बढ़ा देता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से वो आपका रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ा देगा, और रेस्पिरेशन बढ़ गया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इट विल आल्सो इंक्रीज। तो इन टोटल अगर आपको कोई पूछे कि इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, तो इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। आप देख लो हर एक जगह पे वो एनाबॉलिज्म ही प्रमोट कर रहा है ना? एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनाना, छोटी चीजों को जोड़ के बनाना, राइट? सो हियर एनाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म वेर यू टेक मोनोमर्स एंड यू मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल, अ लार्जर बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को लेके आप ग्लाइकोजन बना रहे हो, फिर ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करके एसिटाइल कोए लेके आप लिपिड्स बना रहे हो स्टोरेज के लिए। सो ऑल ऑफ दीज आर एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। हाँ, वो कैटाबॉलिज्म भी करवाता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज करवा देगा, बट दिस ग्लाइकोलिसिस इज इंक्रीजिंग टू गिव यू मोर एंड मोर एसिटाइल कोए, और ये एसिटाइल कोए जो है इट कैन बी यूज टू मेक फैट्स। ठीक है, इसलिए वो ग्लाइकोलिसिस बढ़ा रहा है। राइट, सो हियर यू कैन सी ऑल ऑफ द 4 organs where it is affecting. Focus on the diagram now. This is a revision. ठीक है, insulin secreted by your pancreas when the blood glucose level is high. ये इंसुलिन क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, मतलब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कम कर देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम कर देगा। इट विल डिक्रीज द लिपिड लाइपोप्रोटीन प्रोडक्शन ऑल्सो। वो आपको जानना जरूरी नहीं है, बट दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग। To your peripheral muscle, it will increase the glucose metabolism, ग्लाइकोलिसिस बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ा देगा, मसल मास भी बढ़ाएगा। ठीक है, to your adipose tissue, मतलब the fat storing cells, it will increase the glucose metabolism. It will increase lipogenesis. Lipogenesis is
synthesis of lipids and it will decrease lipolysis. लिवर के अंदर डिक्रीजिंग द ग्लूकोज सिंथेसिस, इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो इस हिसाब से इंसुलिन जो है दिस इज एक्टिंग. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. हम सिंड्रोम्स की बात कर रहे हैं, डिजीजेस की बात कर रहे हैं वेयर देयर इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. हाइपो का मतलब होता है लेस, इंसुलिन इज सिक्रेटेड लेस. दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज mellitus. हमने एक डायबिटीज ऑलरेडी पढ़ा है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस. सो दिस हियर इज डायबिटीज mellitus. इट इज टाइप 1. ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स है. वी विल सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. जस्ट फोकस ऑन दिस डायबिटीज mellitus टाइप 1. ये कंडीशन है ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. नाउ द सेल्स, अभी इंसुलिन तो है नहीं, है ना, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, नहीं सिक्रेट हो रहा है, तो चाबी नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलेगा. दरवाजा नहीं खुलेगा तो द sugar will not enter your cells. Clear? So that is the first statement. The cells cannot uptake sugar from the blood. ये blood में से sugar जो है वो enter ही नहीं कर पाएगा because you do not have insulin. So the amount of sugar increases in the blood. This is known as hyperglycemia. अभी आपके blood में से ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकता है कोई भी सेल में, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. तो बढ़े हुए लेवल को बोलते हैं हाइपर, मतलब हाई ग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज इन ब्लड. ठीक है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस हाइपरग्लाइसीमिया. अभी एक लेवल से ज्यादा तो अच्छा नहीं है ना बॉडी के लिए ग्लूकोज बढ़ जाना. तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस हाई ब्लड ग्लूकोज. द फर्स्ट इफेक्ट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया. अभी आप सिर्फ नाम सुनो तो भी आपको समझ में आए. ग्लाइकोज का मतलब होता है ग्लूकोज, है ना, और यूरिया आपको एंड में दिख रहा है URIA, इसका मतलब होता है इन यूरिन. ठीक है, तो अगर आप टर्म को ही तोड़ के समझो तो आपको समझ में आएगा कि ग्लाइकोसूरिया मीन्स यूरिन में ग्लूकोज होना. ओके, सो ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन if the amount of glucose exceeds from 180 milligram per deciliter in blood. डेसीलीटर का मतलब होता है 100 मिलीलीटर. ठीक है, 100 ml. अगर आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 180 मिलीग्राम से ज्यादा जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है दैट विल बी एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन. ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया. दैट मीन्स यूरिन में ग्लूकोज होना. ठीक है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा तो. आई टोल्ड यू द नॉर्मल लेवल इज समवेयर अराउंड 100 to 120. ठीक है ना, नॉर्मल लेवल 100 या 120 के आसपास हो सकता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 100 ml. ठीक है, बट व्हेन इट इंक्रीजेस अबव 180 इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू योर यूरिन. सेकेंड थिंग, अभी ग्लूकोज जो है इट इज अ सल्यूट. तो ग्लूकोज जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. सो द वाटर इट फॉलोज ग्लूकोज इनटू यूरिन बाय ऑस्मोसिस, और इसकी वजह से पानी जो है उसका भी लॉस होगा. राइट, सो दिस लीड्स टू एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. दिस इज नोन एज पॉलीयूरिया. वही देखो, यूरिया वापस आ गया तो इसका मतलब हुआ इन यूरिन. पॉली का मतलब होता है बहुत, है ना, तो बहुत यूरिन बन भी रहा है और बहुत बार यूरिनेशन या मिक्चुरेशन करना भी पड़ रहा है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज पॉलीयूरिया. ये सेकेंड सिम्टम है ग्लाइकोसूरिया. ग्लूकोज यूरिन में होना, उसकी वजह से वाटर भी यूरिन में उसके पीछे पीछे जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, एंड दिस लीड्स टू फ्रीक्वेंट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन. अभी सारा पानी तो ऐसे ही निकल जा रहा है यूरिन में ग्लूकोज के पीछे. सो इट ऑल्सो कॉजेज अ कंडीशन नोन एज पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि यू फील थर्स्टी, है ना, थर्स्टी फील होता है, आपको प्यास ज्यादा लगती है. तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से जो पेशेंट होगा दे विल बी फीलिंग एक्सेसिव थर्स्ट, एंड दिस इज नोन एज पॉलीडिप्सिया. एंड द लास्ट सिम्टम इज पॉलीफेजिया. अभी क्या हो रहा है, आपके जो सेल्स है, ओके, दे आर नॉट एबल टू टेक द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड. सो योर सेल्स विल टेल व्हाट, योर सेल्स विल बी सेइंग कि ओ वी आर स्टार्विंग, वी आर हमारे पास तो खाना नहीं पहुंच रहा है, हेल्प हेल्प. तो ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, तो बॉडी को क्या डिटेक्ट होगा,
कि शायद हम लोगों ने कुछ खाना वाना नहीं खाया है या स्टारवेशन है, इस वजह से सेल्स जो है दे आर नॉट गेटिंग ग्लूकोज। तो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रिगर हंगर। वो आपके ब्रेन को बोलेगा कि अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाते रहो। तो दिस इज नोन एज पॉलीफेजिया। फेजिया जहां भी आएगा उसका मतलब फूड से ही रिलेटेड होता है ना। जैसे ईसोफेगस हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया, तो खाना खाना, निगलना, तो उस प्रोसेस को आप फेजिया बोल सकते हो। तो पॉली अगेन मीन्स मेनी और मोर, एंड फेजिया मीन्स टू ईट मोर। तो ऐसा कब होगा, व्हेन यू आर हंग्री। ठीक है। तो ग्लूकोज है आपके ब्लड में, लेकिन दिस ग्लूकोज इज नॉट एंटरिंग योर सेल्स। तो सेल्स क्या सिग्नल करेंगे कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको कुछ खाना नहीं मिल रहा। तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि चलो बेटा खाना खा लो, है ना। तो यू विल फील हंगर। So these are the four symptoms of hyposecretion of insulin. जब आपका इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो what do you see? You see hyperglycemia, जिसका मतलब है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो you see four different symptoms, which are glycosuria, यूरिन में ग्लूकोज होना, polyuria, frequent urination, okay, dilute urine. Third is polydipsia, to feel thirsty, and polyphagia, to feel hungry. देन आई टोल्ड यू कि जब कीटोन जब भी आप स्टारवेशन कंडीशन में हो, जैसे बोला था ना कि आपका बॉडी जो है वो सेंस करेगा कि अच्छा आपने 10 दिनों से खाना नहीं खाया, तो इट विल नॉट डिस्ट्रॉय योर मसल एनी मोर, है ना। वो मसल को कितना तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। तो व्हाट इट विल स्टार्ट डूइंग, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग योर लिपिड्स। वो लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो यू गेट एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए जो है ऐसे दो मॉलिक्यूल को मिला के एसिटो एसिटेट बनाता है, फिर ऐसे 3 मॉलिक्यूल को मिला के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बनाएगा। तो ये जो है एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और एसिटो एसिटेट, दीज थ्री आर टुगेदर नोन एज कीटोन बॉडीज। अभी आप नाम से ही समझ लो, एसिटो एसिटेट का मतलब हुआ इट हैज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट, एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, तो उसके पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसका मतलब है कि दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ऐसा कीटोन बॉडीज जब भी आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो इट विल लीड टू कीटो एसिडोसिस, जिसका मतलब है आपका ब्लड का पीएच जो है वो एकदम कम हो जाएगा, है ना, एसिडिक हो जाएगा। नाउ दीज कीटोन बॉडीज दे कैन बी टेकन अप बाय योर ब्रेन एंड योर हार्ट। भी आपके ब्रेन और हार्ट जो है उसको ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, बॉडी ज्यादा बना भी नहीं सकता, तो दे विल शिफ्ट onto these ketone bodies। ठीक है। तो एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट और ब्यूटरिक एसिड। नाउ एक्सेस कीटोन बॉडीज जो है दे विल अगेन बी सिक्रीटेड और एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन। तो एक्सक्रीशन ऑफ दीज टॉक्सिक कीटोन बॉडीज थ्रू यूरिन। टॉक्सिक क्यों, क्योंकि वो पीएच कम कर रहा है ना, एसिडिक कर रहा है ब्लड का। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू कोमा, इसलिए इसका एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा कीटोन बॉडीज को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। देयर इज ऑल्सो मसल ब्रेक डाउन फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बेसिक थोड़ा ग्लूकोज होना चाहिए बॉडी में। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, आपके मसल को तोड़ के अमीनो एसिड बना के, अमीनो एसिड में से ग्लूकोज बनाया जाए तो उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। द कंबाइंड इफेक्ट, ये सब मिला के, कीटोएसिडोसिस है, ब्लड का पीएच कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ऑल ऑफ दिस लीड्स टू डायबिटिक कोमा। अगर ये बहुत बढ़ गया ना तो डायबिटिक कोमा हो सकता है पेशेंट में। द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस एंड मे इवन डाई। इंसुलिन हार्मोन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन इन दिस डिजीज। अभी ऐसे कंडीशन में जहाँ पे इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन है, मतलब इंसुलिन ना होने की वजह से ये सब हो रहा है, then in such cases insulin is given to the patient, है ना, उनको इंसुलिन दे दो आप, so the patient will be fine. So this is how the treatment is done. The second problem could be hyper secretion of insulin. हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन का मतलब होता है इंसुलिन कुछ ज्यादा ही सिक्रीट हो रहा है। हाइपर सिक्रीशन होने के कारण अभी क्या होगा, इंसुलिन का काम क्या है, इट विल टेल द सेल्स टू अपटेक ग्लूकोज। अगर इंसुलिन बढ़ गया तो वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है दैट विल बी टेकन अप बाय योर सेल्स। तो जितना ज्यादा सेल ग्लूकोज को टेक अप कर रहे हैं तो
द ग्लूकोज डिक्रीजेस इन द ब्लड, ठीक है ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपका बॉडी सब ग्लूकोज खा जा रहा है तो आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। सो दिस में लीड टू सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि स्लीपीनेस, आपको एकदम से थकान थकान लगेगी, स्वेटिंग, पेलोर, पेलोर का मतलब होता है एकदम पेल हो जाना कलर, है ना, जैसे भूत देख लिया और व्हाइट कलर का हो जाता है ना स्किन, वैसे ही आपको दिखेगा, तो इसको पेलोर बोलते हैं। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका दिमाग ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा, है ना। फिर इरिटेबिलिटी, ये वो एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, कौन सा स्निकर्स की एड है कि व्हेन यू आर हंग्री यू आर नॉट योर सेल्फ, राइट। सो द रीजन इज दिस कि जब आप हंग्री होते हो, है ना, ग्लूकोज लेवल कम है, तो आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, आप बहुत जल्दी से चिढ़ जाते हो, सो दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी। एंड फाइनली हंगर, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, तो वो ब्रेन को क्या बोलेगा कि चलो अभी खाना खाने का टाइम हो गया। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स, ठीक है। नाउ दिस हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना will deprive the nervous system, retina, RBC and genital epithelium of glucose। अभी ये चार जगह जो है उधर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि these four are the regions which do not uptake glucose dependent on insulin। ये चार जगहों पे इंसुलिन डिपेंडेंस नहीं है टू अपटेक ग्लूकोज, तो योर नर्वस सिस्टम को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो दीज आर द सिम्टम्स। रेटिना को नहीं मिलेगा तो देर इज ब्लाइंडनेस, है ना, थोड़ी देर के लिए आपको आंख के आगे अंधेरा दिखने लगेगा। द पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं ना जो खाना वाना नहीं खाते, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइपोग्लाइसीमिया। देर इज लॉस ऑफ साइट एंड द पर्सन में इवन डाई। ये दूसरी जगह पे जहाँ हाइपोग्लाइसेमिया होता है दैट इज इन डायबिटिक पेशेंट्स। अभी पेशेंट जो है वो आपने देखा होगा दे टेक इंसुलिन इंजेक्शन, इंजेक्शन लेने के तुरंत बाद आपको खाना खा लेना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका ब्लड में से ग्लूकोज अचानक से सब सेल के अंदर चला जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल ड्रॉप ड्रास्टिकली अचानक से, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। इसलिए जब आप इंसुलिन भी ले रहे हो तो उसके साथ में कुछ खाना वाना खाना चाहिए, राइट। दिस इज द इंसुलिन पोर्शन, हमने नीचे वाला ग्लूकागॉन का देखा था। इंसुलिन का जस्ट अ रिविजन, इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल मतलब बाकी के सोमैटिक टिश्यू लाइक योर एडिपोज टिश्यू एंड योर मसल्स, राइट। इट विल ऑल्सो कॉज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन लिवर, लिवर के अंदर वो ग्लाइकोजिनेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करवाएगा, एंड दिस इज हाउ इट विल रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, वो सब ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, उसको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ऑक्सीडाइज करेगा, लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर करेगा, एंड दिस इज हाउ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम्स बैक टू नॉर्मल। अभी आई टोल्ड यू देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना, दो टाइप के डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, ध्यान से सुनना दोनों के बीच का डिफरेंस। इन द फर्स्ट केस जो हमने देखा, ओके, इन हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, व्हाट हैपेंस इज देयर इज नो इंसुलिन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि योर पैनक्रियाज इज डिस्ट्रॉयड, पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है, ओके, फॉर सम रीजन दे आर नॉट सिक्रीटिंग इंसुलिन और दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से या फिर जेनेटिक जो है इट इज अ डिजीज, है ना, जिसकी वजह से बीटा सेल जो है दे आर डेड, बीटा सेल कम हो गए, डेड हो गए, तो दे कैन नॉट सिक्रीट इंसुलिन, तो इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, तो इंसुलिन इज नॉट सिक्रीटेड बट योर ब्लड हैज ग्लूकोज, राइट। तो इंसुलिन नहीं है इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया है, यू हैव हाई ब्लड ग्लूकोज। अभी बिना इंसुलिन के तो दिस ग्लूकोज कैन नॉट इवन एंटर योर सेल, so this type of diabetes is known as diabetes mellitus type 1, ठीक है, जहाँ पे इंसुलिन ही नहीं है इसलिए ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रहा। फॉर दिस द ट्रीटमेंट इज टू गिव यू इंसुलिन, और इंसुलिन जैसे ही आप दोगे द पर्सन सेल्स दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ दिस ग्लूकोज, ठीक है। नाउ दिस इज सीन इन अबाउट 20 और 10% ऑफ द पेशेंट्स। डायबिटीज के पेशेंट्स में 10 या 20% ही लोगों को ये होता है, टाइप 1, ओके।
एंड नॉर्मली दिस इज सीन इन चिल्ड्रन. छोटी उम्र से ही अगर आपको डायबिटीज है देन यू मोस्ट प्रोबेबली हैव डायबिटीज टाइप 1. जेनेटिक रीजंस के कारण बीटा सेल्स जो है दे आर नॉट सिक्रेटिंग इंसुलिन. अभी सेकंड टाइप का डायबिटीज जो बहुत प्रिवेलेंट है, 80 से 90%, 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स हैविंग डायबिटीज हैव दिस टाइप 2 ऑफ डायबिटीज. ये कैसे होता है? ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है. आप रोज सुबह उठ के फाफड़ा गाठिया ये सब खाते हो, जलेबी वलेबी खाते हो रोज, है ना, या फिर बहुत ज्यादा शुगरी सब्सटेंस खाते हो, तो क्या होता है कि योर सेल्स नो दे बिकम सेंसिटाइज्ड, डिसेंसिटाइज्ड. अभी उनके रिसेप्टर्स जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इंसुलिन से. सो दे आर रिसेप्टर्स दे बिकम डिसेंसिटाइज्ड. इंसुलिन है, ग्लूकोज भी है, लेकिन योर सेल्स दे आर रिसेप्टर्स दे आर नॉट फंक्शनिंग. अभी सेल का रिसेप्टर आपका दरवाजा ही जैम हो गया तो चाबी हो या ना हो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है. सो दैट इज नोन एज डायबिटीज टाइप 2. द सेल्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन. तो हाई ब्लड शुगर है एंड हाई ब्लड में इंसुलिन भी है ज्यादा, ये येलो कलर वाला इंसुलिन है, बट योर सेल्स दे आर ओनली नॉट एक्सेप्टिंग दिस इंसुलिन. तो इस वजह से जो हाई ब्लड ग्लूकोज रहता है दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2. द फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज उसका पुराना नाम जो है दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. इसका मतलब अगर आपने इंसुलिन दे दिया तो द डायबिटीज विल यू कैन ट्रीट इट ओके फॉर सम टाइम. जब तक इंसुलिन आप देते रहोगे तब तक यू कैन ट्रीट द सिम्टम्स. ठीक है. द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप. ओके. सो इसका मतलब हो गया ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट, IIDDM ऐसा. ओके. तो ये हो गया इंसुलिन इंडिपेंडेंट. इसमें इंसुलिन है, अगर आप इंसुलिन का शॉट इनको भी दोगे फिर भी देर इज नो डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज इनके सेल जो है दे ओनली आर नॉट एक्सेप्टिंग इंसुलिन. ठीक है. तो दीज आर द टू डायबिटीज टाइप्स. चलो, so we end the lecture here, and from the next lecture what we are going to do is we will just be discussing few um, actually you know what we have to discuss gonads. अभी जो आपके सेक्स हार्मोन्स है वो डिस्कस करना है. तो we will actually be starting with your human reproduction. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही शुरुआत करेंगे. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेक्स हार्मोन्स, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी और ये फिजियोलॉजी जो दो है उसको मिक्स करके हम पढ़ेंगे. राइट. अलग अलग पढ़ने से अच्छा वैसे ही पढ़ना हो गया तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और अच्छे से वो वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा. सो विल स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेक्स हार्मोन्स. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल सेक्स हार्मोन्स. We will also see fertilization as well as the development of embryo. तो बच्चा कैसे डेवलप होता है फ्रॉम zygote टू fetus टू बेबी, तो वो भी हम पूरा नेक्स्ट चैप्टर में ही कवर कर लेंगे. ठीक है. तो उसमें भी कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं वी कैन कवर इट वेरी वेल. ठीक है. तो चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.